Hello, hi everyone. Welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh, and I am back with yet another video in the same series of the list which I showed you in the previous video. This mastering a technical interview. So I'll be again today solving a simple problem, one of the simple problems of bit manipulation, not a harder one, because I couldn't get time to solve problems today. So we'll be solving this problem single number. So what do we have here is given a non-empty array of integers nums, every element appears twice except for one. Okay. So we are given a non-empty array of integers nums. वही एक nums array दिया है जिसमें integers है. Every element appears twice except for one. तो हर एलिमेंट दो बार एग्जिस्ट करता है एग्जैक्टली दो बार एक एलिमेंट के अलावा. अपने को बस वो एक एलिमेंट जो एक बार एग्जिस्ट कर रहा है वो फाइंड करना है. फाइंड दैट सिंगल वन. यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस. अपने को क्या करना है कि we need to implement a solution जिसकी complexity linear हो. Linear means it should use exactly like एक loop ही use करे. Linear loop, not a loop inside a loop or something like n log n, big of n solution in short, and no extra steps. Let's see how we can solve this. So we can see that example number first, 2 2 1. So it can be seen that in this example 1 is the element which appears exactly once. Then here in the second example 4 1 2 1 2. So 4 is the number which appears exactly one. Example number 3, 1 is the number which appears exactly once. So let's see how we can solve this problem. There is no order in this array, है ना? So it's not like the array is always sorted in ascending order or descending order. The elements appear adjacent to each other. There's nothing like that. So like if there would have been an order, then what you could have done is like हमारे पास order में elements है 1 1 2 2 3 3. Just check for the adjacent elements. So if you do not find a match, then you will find that unique single existing element in the array. But that's not the case here. We have all the elements appears exactly twice except for one. So let's take this example to understand how we can solve this problem. 4 1 2 1 2. 4 1 2 1 2. So the problem is from bit manipulation section. So you can think of it like that. Like let's just first forget about that bit manipulation section which we have seen here and just think out loud कि भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. सिंपल है, एक हैश मैप मेंटेन कर लो या फ्रीक्वेंसी एरे में. फ्रीक्वेंसी एरे तो नहीं कर सकते बिकॉज द नंबर्स आर लार्ज. ठीक है कर सकते हैं बट लेट्स जस्ट मेंटेन अ हैश मैप. ठीक है तो एक हैश मैप मेंटेन कर लो एंड जस्ट काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट. 4 appears once, 1 appears twice, then 2 appears twice. So now you can iterate over this hash map and you can find the element which appears once, so which has a frequency of 1. So this is your key and this is your value. So for the element for which the value is 1, that element is your answer. So 4 is your answer. ठीक है तो यही है आपका आंसर 4, this one. So how you can solve this problem? This is the first way, simple. Just create a hash map, iterate over the array. Okay, so take a hash map. So let's just write a solution, unordered map. Let's say MP. Iterate over the array for IT, the array which we have been given, and MP IT plus plus. So in this fashion, you will create a hash map and then initialize this answer with -1 and iterate over this map MP. So if you find an element which has a value of 1, इसकी value 1 है, then the answer is that element.
So it, the key of that key value pair, dot first, and you can break right from here and print this answer. So this is a solution which you have using hash map. So I'm not going to implement this solution. You can do it for yourself because this is not the optimal one which we are looking for in this problem. As you can see that we have been given that you must implement a solution with the linear runtime complexity and use only constant extra space. So you do not need to implement, you cannot implement a solution which has a unordered, which contains a hash map. ठीक है? Just implement a solution which do not contain any extra data structure. So let us move towards that solution. We can have four. We have 4 1 2 1 2. Same example लेते हैं. 4 1 2 1 2. 4 1 2 1 2. ठीक है. अब आते हैं अपना उस पे the solution which we are looking for. So in the solution we have to think at the bit level. देखो कौन सा ऐसा ऑपरेशन है, हम ऐसा क्या करें कि भाई हमारे पास वही एलिमेंट रह जाए जो एक बार एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सारे डिसअपियर हो जाए. किसी तरह से एलिमेंट खुद ही को काट दे, दो दो को काट दे, एक एक को काट दे, चार को काटने वाला कोई नहीं है तो चार अपना अकेला रह गया. आपस में भिड़ा दें. इट्स समथिंग लाइक कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अपनी अपनी पैरिटी का, अपनी अपनी कम्युनिटी का, यू कैन से, है ना. अपनी अपनी कम्युनिटी का जो चार्जेस हैं वो आपस में भिड़ गए, नाश हो गए, तो ये रह गया चार क्योंकि ये अकेला था, है ना. तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू हियर. तो कैसे करेंगे इसको, सोचो. कौन सा ऐसा ऑपरेटर है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास बिटवाइज में. एंड होता है एक तो, और क्या होता है, और होता है, और क्या होता है, जॉर होता है. एंड में क्या होता है, 0 1. अगर एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0. 1 एंड 1 करेंगे तभी 1 आएगा, बाकी सब केसेस में 0 आ जाना है. 1 ये अपना और ऑपरेटर, एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए. जॉर ऑपरेटर सेम बिट्स हैं तो कैंसिल कर देगा. मीन्स 1 जॉर 1 is going to give you 0. 0 zor 0 is going to give you 0. If the parity of the bits are same, the XOR operator is going to give you 0. तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं एक को एक के साथ XOR कर देता हूँ, इसको इसके साथ XOR कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बिट्स जो है वो सेम पोजीशन में लाई कर रहे हैं, सेम ही तो चीज़ है. तो 0 0 0 which is 0. तो 1 XOR 1 would be 0. Similarly 2 XOR 2 would be 0. तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, 4, क्योंकि 4 XOR 0 would be 4. तो मतलब सिंपल है, यहां से सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए आपको कि भाई सारे एरे के एलिमेंट्स को XOR कर दो, एलिमेंट्स को उठाओ XOR कर दो, जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर, जो बचेगा दैट वुड बी योर आंसर. क्योंकि जो एलिमेंट्स दो दो बार आएंगे वो अपने आप को कैंसिल कर देंगे XOR ऑपरेटर से. ठीक है. तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस. कोड करें या फिर कोड ही कर देते हैं, इसका सूडो कोड तो कुछ खास नहीं है, बिकॉज यू जस्ट नीड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल. इनिशियलाइज अ वेरिएबल सिंपल. तो इनिशियलाइज करो एक वेरिएबल को विच इज ऐसे 0. इटरेट करो इस एरे पे, जो भी आपका एरे है, और आंसर इज इक्वल टू आंसर XOR IT एंड फाइनली प्रिंट योर आंसर. बस इतना सा सोल्यूशन. So int answer is equals to 0 for auto it nums answer is equals to answer XOR it, and you're gonna return this answer right from. ठीक है, देखते हैं. So it worked. Let's submit it.
ठीक है, it's done. So I hope you understood the solution. What is the time complexity? You can see that we are iterating over the array exactly once, so the time complexity would be big often and the space complexity would be constant क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज नहीं कर रहे हैं. Clear है? So I hope you learned something from this. The key learnings from this video should be how bitwise operations can be used to solve these type of problems, है ना. bitwise operations में आपको ऐसे नहीं कि भाई एंड और ये ऐसे पढ़ लिया और हो गया, नहीं. There are super cool things which you can do with these operators if you solve problems related to them. And that you have that art comes with experience, है ना. So you need to solve more and more problems. The first thing. Second is सेकंड तो कुछ नहीं है, बस यही है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड.